So let's see a real world adopter. रियल वर्ल्ड adopters में ये है कि जावा में जो पुराने वर्जन्स हैं जावा के उनमें देर इज एन इंटरफेस ऑफ एनुमरेशन, और जो नए वर्जन्स हैं जावा के इट हैज़ an interface of iterator. So the question is that can we hide enumeration interface behind the newer interface iterator? कि अगर हमने पहली बात तो है कि एनुमरेशन का मकसद क्या है. So we'll start our discussion from here. Enumeration का what's the purpose of enumeration? If you have around Java for a while, you probably remember that early collection types, for example, vectors, stacks, hash tables, and few others, implement a method elements which returns enumeration. तो ये डिफरेंट किस्म की कलेक्शन है जावा में, लेकिन अगर किसी भी इम्प्लीमेंटेशन का एलिमेंट मेथड अगर आप कॉल करें तो एलिमेंट मेथड उस पर्टिकुलर कलेक्शन की एक एन्यूमरेशन टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है. और उस एन्यूमरेशन टाइप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने का मकसद ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट को फिर आइटरेट कर सकते हैं विद दीज टू मेथड्स. द एन्यूमरेशन इंटरफेस अलाउज यू to step through the elements of a collection without knowing the specifics of how they are managed in a collection. So it allows you to step through the elements of collection without knowing the specifics of how they are managed in a collection. तो एक कॉमन इंटरफेस है, वेक्टर है, स्टैक है, हैश टेबल है, और भी है. तो उसकी जब वो एनुमरेशन बना देगा तो फिर वेक्टर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी. रादर ये दो मेथड अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वेक्टर को मैनिपुलेट करना है या स्टैक को करना है या हैश टेबल को करना है. यू हैव टू मेथड्स अवेलेबल टू यू. अब इन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन इसको आगे डिस्कस करते हैं. देन इन new versions of Java, when Sun released their more recent collection classes, they began using iterator interface that, like enumeration, allows you to iterate through a set of items in a collection but also adds ability to remove items. तो इसमें एक एडिशनल मेथड है remove का. As next ये फंक्शन सिमिलर ही है जैसा enumeration में है. Let me first of all discuss what has more elements is doing. Has more elements tells you if there are any more elements in the collection. यानी कि ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू. अगर आप फॉर एग्जांपल इंडेक्स 0 पे खड़े हैं तो इंडेक्स 1 चेक करेगा कि जी आगे कोई और एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है. अगर नेक्स्ट एलिमेंट होगा तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू. और नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट गिव्स यू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द कलेक्शन. तो अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट कॉल करेंगे तो जो अगला एलिमेंट होगा एक्चुअली दैट एलिमेंट विल बी रिटर्न. तो दिस इज हैज मोर एलिमेंट इज अ चेक टू सी दैट चेक टू सी देयर इज इफ देयर इज एनी नेक्स्ट एलिमेंट. तो इसका मतलब है कि पहले हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट कॉल करते हैं. ये इनका मैकेनिज्म है. और जो आइटरेटर है, आइटरेटर में भी ऐसे ही है. हैज़ नेक्स्ट चेक करेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है. और नेक्स्ट इज एक्चुअली गोइंग टू
return the next element. तो पहले आप चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, फिर आप गेट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट with next method. But it has an additional method, remove. It simply removes an item from the collection. तो एक मेथड का डिफरेंस है और बाकी इंटरफेस का नाम डिफरेंट है, वहाँ पे यूज हो रहा है हैज मोर एलिमेंट्स और नेक्स्ट एलिमेंट, जबकि आइटरेटर में यूज हो रहा है हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अच्छा जी, अब पहले तो देखते हैं ना ये यूज कैसे होंगे। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस द कोड। It's a main method, and for example आपने जो आपके जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यू कैन पास सम एलिमेंट्स एज आर्गूमेंट ऑफ मेन मेथड। ये जो मेन मेथड है ये स्ट्रिंग में आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं इसको फ्रॉम रन स्पेसिफिकेशन। तो रन स्पेसिफिकेशन में हमने आर्गूमेंट पास कर रहे हैं इसको 64936330। सो दीज ये आर्गूमेंट की बन जाएगी एरे, और जब भी आप मेन मेथड कॉल करेंगे तो ये उठाएगा एरे को और एरे पास कर देगा मेन मेथड को। अब ये जो आर्गूमेंट की एरे है इन हेयर एरेज डॉट एज लिस्ट, ये करेगा कि जो एरे को है लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, and list will be passed to the vector. Once we are creating an object of a vector, because vector cannot accept array, so we are converting array into a list, और लिस्ट हम पास कर सकते हैं वेक्टर को। तो इससे क्या होगा कि इन 6 एलिमेंट्स की 649636 इनका एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, एंड द वेरिएबल जो होगा वेक्टर का वो होगा v। अब इस वेक्टर को हम अगर हमने इसका एनुमरेशन क्रिएट करनी है तो हम कॉल करेंगे v डॉट एलिमेंट्स। तो v डॉट एलिमेंट्स करेंगे तो एलिमेंट इज गोइंग टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ काइंड एनुमरेशन। और अगर हम वेक्टर के अगेंस्ट वेक्टर के अगेंस्ट हम आइटरेटर मेथड कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा आइटरेटर काइंड का। तो एलिमेंट्स एंड आइटरेटर, दीज आर टू मेथड्स व्हिच कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म्स any particular collection into either enumeration or iterator. अब फॉर एग्जांपल पहला कोड डिस्कस करें तो हम एनुमरेशन बना ली, v डॉट एलिमेंट कॉल करके एनुमरेशन बन गई। अब क्योंकि एनुमरेशन में दो मेथड हैं, एक है हैज मोर एलिमेंट्स और एक है हैज नेक्स्ट एलिमेंट। सो वी आर iterating it through a while loop. We say enumeration dot has more elements, so it is going to check that whether next element exists or not. If exists, then it will be a true statement and the control will come into the next statement, that is system dot out dot println, and it is going to actually fetch the next element with enumeration dot next element. तो जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा इट इज गोइंग टू प्रिंट द नेक्स्ट एलिमेंट। सेम इज द टेक्निक इन आइटरेटर। once we create an iterator with the iterator method, then in a while loop first of all we check that whether there is a next element available or not. If it returns true, then we actually print the next element with iterator dot next. So both the code, upper code and lower code, both are going to give the same output.
तो पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये बताइए, आपको इस कोड में कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। एनी कंफ्यूजन इन द कोड? इस कोड को आप सिंपली रन करके भी देख सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। Yes. Okay. Now we have to make use, we have to adopt enumeration, which is old interface, to an iterator, which is a newer interface. So client expects iterator, which is a newer interface, so we call it a target interface. And this is an adoptee interface. So has next has to be mapped with has more elements, and next method has to be mapped with next element, whereas remove method does not exist in enumeration, so we can't do anything about it because we don't have any equivalent method available in the enumeration. So let's see how are we going to implement it. Remember that client only is going to see the iterator or expects the iterator. So this is how we are going to implement. Between iterator and enumeration interfaces, we have enumeration, iterator, adopter. So this is an adopter. Since it is target interface, so it has to implement the iterator. It means that adopter has to implement has next, next, and remove. All the three methods are required to be implemented by enumeration iterator because client is going to interact with the iterator, and it will compose an object of enumeration with it so that it can further call has more element and next element methods. Let's see the implementation of the adopter. Enumeration iterator implements iterator. Within its, it will have a reference of enumeration, and in its constructor, it is going to get the object of enumeration and will keep it here as a reference of concrete enumeration. Then is the implementation of has next. In has next, it is simply delegating its task to has more elements of enumeration, and for next is delegating its task to enumeration of next element. Whereas there is no remove method in enumeration, so it is going to throw an exception of unsupported operation exception object, because unfortunately we cannot support iterators remove method, so we have to give up, and here we just throw an exception. अगर रिमूव कॉल करेगा यूजर तो उसको ये एक्सेप्शन रिटर्न हो जाएगी कि जी रिमूव मेथड इज नॉट सपोर्टेड. Let's see. So this is the final structure, and this is main method where we are going to make use of the adopter. This is a main method. In we are going to create a vector, and we are going to create the object of enumeration adopter, and we are going to pass the v dot elements. v वेक्टर है, v डॉट एलिमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली
कन्वर्ट हो जाएगा एनुमरेटर में और एनुमरेटर टाइप ऑब्जेक्ट सेव कर लेगा एनुमरेशन आइटरेटर। सो वी आर डूइंग इट अ सिंगल लाइन, एक लाइन ऐड भी कर सकते हैं, पहले हम कन्वर्ट कर लें आइटरेटर एनुमरेटर में और फिर उसको पास करें, बट इट्स अ सिंगल लाइन। Once we are passing v dot elements, it means that we are dynamically creating an enumeration, and enumeration object is being composed by the iterator. Now we are going to, but enumeration iterator is a kind of iterator, so we are going to, we can call the has next and next methods of iterator for the adapter. But has next is going to call enumeration has more elements, and next is going to call enumeration dot next element, and this is what is going to, it is going to print this statement, this string. This is implementation of Agnes, and this is implementation of next. Okay, so any question on, let me show you on OBO. तो ये आपको नजर आ रहा है, वही कोड है, और run as Java application. लेट्स मी, अच्छा मैंने इसमें उसके आर्गूमेंट सेट नहीं किए हुए, इसलिए रिटर्न नहीं कर रहा। लेट मी रन इट इन अ डीबग मोड। सो आर्गूमेंट ब्लैंक है, मेरे आर्गूमेंट की लिस्ट मेरी ब्लैंक है, इसलिए मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रही। सो व्हाट विल आई डू, आई विल गो टू debug configuration, and these are the arguments. Here I can put something, let's see if it works. So here we are getting the arguments 2, 4, 6, and it is creating a string of 7 elements. And let's move forward step into, इसने वो लाइब्रेरी क्लासेस खोल दी हैं। Let me move to the next. So here you can see that this is an array list. So we have created into a list that is basically array list. ये array list के elements हैं जो पड़े हुए हैं इसके अंदर। इसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे हैं आइटरेटर
एडॉप्टर का। तो एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, इसकी टाइप है एनुमरेशन की। तो एनुमरेशन के अंदर देखें आप, ये इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एंड अब हम हैज़ मोर एलिमेंट्स को कॉल करेंगे। लेट मी कॉपी इट हेयर, कंट्रोल सी, let me place in the watch list. So you can see that enumeration has more elements. If I execute it should return true. ठीक है जी। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? It is going to return 4. So let me execute next statement. अगली स्टेटमेंट में आ गया और ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट 9। अच्छा, अगला एलिमेंट है 5, क्या रिटर्न करेगा? ओए होए, फिर कहाँ ले गया ये? एक्सेप्शन थ्रो कर दिया इसने। लेट मी अगेन रन इट। ये देखें, ये पूरा इसने रिटर्न कर दिए 2 4 6 7 8 9। ठीक है जी। डीबग बोर्ड में आप थोड़ा सा टेस्टिंग कीजिएगा, मैं कोड देता हूँ आपको। बट इट इज़ गोइंग रिटर्निंग मी द सेम स्ट्रिंग हेयर। 1 by 1 चेक करेगा और उसके बाद रिटर्न कर देगा। So this is execution of the adapter. And okay, so homework is analyze the similarity differences between adapter and decorator pattern, execute the dot code, and try to implement the class adapter for duck की क्लासेस। जैसे डिस्कस किया था, एक साइड पे इंटरफेस हो जाएगा, एक तरफ कंक्रीट क्लास हो जाएगी। इसको फिर डिस्कस करना है, कल अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्लास इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, जो जिसने कामयाबी से कर ली, ही विल आल्सो एक्सप्लेन द कोड। ओके, so it finishes the adapter pattern, and next we are going to start the factory pattern. फैक्ट्री पैटर्न को हम शुरू करते हैं मगरिब की नमाज के बाद। So we will resume the lecture at 7:30, most likely 7:30 तक मगरिब हो जाएगी या नहीं होगी। चलें 7:45 पे लेक्चर शुरू करेंगे, मगरिब पढ़ें तसल्ली से, और उसके बाद ये पौने घंटे में कवर हो जाएगा फैक्ट्री पैटर्न। So we take a break here.